वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है वो एक प्रॉब्लम बेस्ड है। प्रॉब्लम का नाम है बाइनरी ट्री पाथ्स। प्रॉब्लम नंबर 257 है, ये लीड कोड पे आपको मिल जाएगी। एक बार प्रॉब्लम समझते हैं फिर इसको सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम में सबसे पहले हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है ट्री नोड और इसमें तीन प्रॉपर्टीज हैं, वैल, लेफ्ट एंड राइट। वैल एक इंटीजर वैल्यू है, लेफ्ट और राइट पॉइंटर है ट्री नोड के लिए। दैट मींस लेफ्ट और राइट में फिर से ही किसी ट्री नोड का एड्रेस आ जाएगा। हमारे पास इनपुट में एक रूट आएगा जो कि ट्री नोड का पॉइंटर होगा। उसके बाद हमें सारे के सारे रूट से लेके लीफ तक के जितने भी पाथ्स हैं उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न करना है। एक एग्जांपल समझते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल में हमारे पास एक रूट आया जिसमें 1 2 3 नल 5 है। अगर मैं ट्री स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में बात करूं तो 1 2 3, 1 के लेफ्ट में 2 है, राइट में 3 है, 2 के लेफ्ट में नल है लेकिन राइट में 5 है। और अगर मैं इसके पाथ की बात करूं तो एक पाथ बनेगा 1 2 5, एक बनेगा 1 3। और अगर मैं इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूं तो 1 एरो 2 एरो 5 एंड 1 और 3 के लिए 1 एरो 3। अगर सिंगल एलिमेंट है तो उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में रिटर्न कर देना है। तो ये हमारा इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन है। एक बार इस चीज को दोबारा समझते हैं क्योंकि यहां पे एक जो पैटर्न यूज हो रहा है कि अगर आप देखो तो रूट से लेफ्ट या राइट कहीं भी जाओ तो आप सेम प्रॉब्लम पे फिर से आ जाते हो। आपको रूट से अगर आप लेफ्ट या राइट किसी भी ट्री नोड पे जाओगे तो आप सेम प्रॉब्लम पे फिर से आ जाते हो, बट प्रॉब्लम में एक लेवल कम हो जाएगा। दैट मींस इट्स अ रिकर्जन प्रॉब्लम। तो हम इसमें रिकर्जन का यूज करेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन रिकर्जन में बेस कंडीशन होती है तो हम बेस कंडीशन उससे पहले अप्लाई करेंगे। अगर इफ रूट, अच्छा यहां पे दो बेस कंडीशन है। अगर रूट नल हुआ तो उस केस में एम्प्टी एरिया रिटर्न कर सकते हो, और अगर रूट नल नहीं है लेकिन लेफ्ट और राइट नल है तो उस केस में आपको सिंगल एलिमेंट की ट्रीट करना है। तो हमारी पहली कंडीशन है कि अगर इफ रूट इज इक्वल टू nil, if root is nil, in that case simply return an array of string, an empty array of string. That's it. First base condition. The second base condition is if root dot left is equal to nil and root dot right is equal to nil. In this condition you have just only one value, that is root val. That's it. So in that case you need to return the single value. So an array of string with only single element, so that will be your in a string format root dot val. So these are your two base conditions. So first, if root is nil, return empty array of string. If root left and right both are nil, then in that case single element, that is root dot val. Now you know that you have either left or right, doesn't matter, but you know there is at least a single child is there. So now you will find out the left tree and right tree. So left tree, since is a recursion call for the left to find the paths, we are going to call the same function again, binary tree paths. And in this case earlier it was root, now we will pass the left part. So root dot left. Similarly right tree, it is binary tree paths root dot right. Now we have the left and right tree, and if you look at it carefully, the paths are nothing but every iteration you are just appending the root value with the lower level path. That means if 2 and 5, if we just consider these two, then 2 arrow 5 is the path, but when you add 1 you are prefixing it with this 1 and arrow. So similarly we have the left and right. Now we have to prefix all of them with the root dot val.
So in this case, we'll first run a for loop for I 0 till I less than length of left tree I plus plus, and here you're doing what? Just left tree ith value will now be, now since you are going to prefix it with, so it will be something like this, in a string format, root dot val plus an arrow plus whatever there was earlier in the ith position. Now this is your, now you have appended all the values with the root val and arrow sign in front of them. Similarly, you will run a for loop again for I less than length of right tree I plus plus, and this time you will append all, you will update all the ith position with again the same thing, string format of root dot val plus an arrow plus whatever there was earlier at that position, ith position. So you have updated the left and the right paths with the root val. So you have updated the path. Now at the end, what you need to return is, you need to return the appended left tree comma right tree. So now what you have done, you have actually merged both left and right tree arrays here and return the common merged array from here, so which contains all the paths for a particular route. So this problem is solved here. So let's reiterate over the solution one more time and then we'll wrap it up. So what we have done is, we have applied the recursion rule here. These two conditions where we are checking whether root is null or left and right are null, in these are base conditions. In these base conditions, we are simply returning, if its root is null, in this case an empty array of string, and if root left and right are nil, in that case single value in the array. That's it. And after that we are iterating over the left and right tree, and then we are appending the left and right tree with the root value and the arrow sign, and then returning a merged array of both of them. So that's all for this solution. Guys, please mention your doubts in the comments. Please like and subscribe. Thank you.